ओके सो कुछ सॉल्व हुआ ये? सॉरी, कुछ मेरे ना ऑडियो डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही थी। अब सही है। सॉल्व हुआ ये किसी से? चैट रूम यूज करो, अनम्यूट करो खुद को, बताओ मुझे कुछ आंसर्स। आमना, यस सर। आंसर्स बताओ, आंसर्स लिख कर बताओ बच्चे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। आंसर्स बताओ कितना आया। चैट रूम यूज करो, मुझे आंसर्स लिख कर बताओ। हेलो, हद हो गई। सुनो इधर। सर मेरा हो गया 2 मिनट। हो गया, हो गया, लिखो लिखो मैत्री, लिखो 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 लिखो। भाई देखो, मैत्री का आंसर आया, पद्मा का भी आंसर आया है, और किसका आंसर आया? आमना ने तो करा ही नहीं, आमना को लगा किसी स्टूडेंट ने लिख दिया। सोमिया, तिशा, दिव्यांशी। चलो मैत्री चेक करते हैं। हाँ? इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अभिषेक का भी कुछ आया, टू द पावर -4। इसे ऐसे लिखते हैं, ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन वाला केस है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर plus 2x to the power -4 is a function of x square plus 2x and x square plus 2x is function of x। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x का फंक्शन है और x स्क्वायर प्लस 2x खुद x का फंक्शन है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि dy ओवर dx, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसे आप इसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर -4 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x की रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। चलो, और उसके बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल बी -4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -4 -1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट कीजिए, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 2x प्लस 2। तो ये आ गया -4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर -5 इंटू 2x प्लस 2। आंसर्स किसके सही हैं? अभिषेक -4 2x प्लस 2, बस डिवाइड नहीं आएगा अभिषेक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक बिल्कुल सही कर रहा है। और मैत्री ने कहाँ गया? -4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर माइनस, बहुत बढ़िया, मैत्री का भी सही आ रहा है। पद्मा ने गड़बड़ मारी है। दिव्यांशी का भी सही है, सोमिया का भी सही है। चल मैत्री, डेट लिख लो, टाइम लिख लो, इसे है ना हर साल सेलिब्रेट करा करना, मैथ्स डे तुम्हारा। आज से तुमसे मैथ्स होनी शुरू हो गई। चल गुड। इसीलिए शुरू में ना बहुत स्लो रखना पड़ता है। आप लोग सीख रहे होते हैं, एक बार आप सीख जाओ ना, फिर तो किसी भी स्पीड में भाग लो। अगर आप सोचो कि डायमेंशन से लेकर अब तक स्टैंडर्ड में इतना डिफरेंस आया है और अब आपको चीजें टफ नहीं लगती, अगर ये चीजें मैं डायमेंशन के टाइम पे करा रहा होता तो शायद मैं समझा ही नहीं पाता कभी। एनीवेज, तिशा तुम्हारा आंसर नहीं आया था। तिशा का आया था? नहीं, तिशा ने नहीं करा था, तिशा का आंसर नहीं था। भाई इसके बाहर ना तुम्हारे नीट में नहीं आता, स्कूल एग्जाम्स तो खैर इतने जाएंगे ही नहीं, इवन नीट इसके बाहर नहीं जाता, तो इसकी तो टेंशन ही मत लेना कि अब इसके बाहर कुछ होगा। रब कर दूं मैं? तिशा हो गया?
पद्मा का भी Yes, सही था। sir. पद्मा का सही नहीं था, पद्मा ने गड़बड़ मारी थी। चलो जी, इसे रब करते हैं। सो डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। डिफरेंशिएशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। आज का हमारा टारगेट है किसी तरह से इंटीग्रेशन भी वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो द फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, आपको एक स्टेप बैकवर्ड्स जाना है, देन यू विल डिवाइड इट। In the same way, integration and differentiation are inverse operations of each other. So I can say it is inverse operation of differentiation. Inverse operation of differentiation. अगर आपने एक बार इंटीग्रेट कर दिया और आपको एक स्टेप बैकवर्ड्स जाना है, देन यू विल इंटीग्रेट इट। सो इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ पहले हम देखेंगे फिजिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन, देन वी विल इंटीग्रेट द एक्सप्रेशंस। लाइक वो आपसे कहता है कि आपने एक रॉड ली, पहले फिजिकली समझो फिजिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो लेट्स से यू हैव a rod AB, the length of the rod is L, the length of this rod AB is L. Divide this rod into some very small elements, each and length of each and every small element is dx. So the length of the entire rod is L. You divide this rod into small elements, infinitesimal small element. Each and every small element is dx. The total length is L. So this point A, coordinates of point A could be written as the coordinate of point A is 0 and coordinate of point B is x equal to L. For A, this is x equal to 0, that's coordinate of point A, and for B, the coordinate of point B is x equal to L. Now, if I'm saying integrate this dx from A to B, that means keep on adding these small elements dx from A to B. Just keep on adding these small elements dx from A to B. So it's like you are combining all dx elements from A to B. A to B means from x equal to 0 to x equal to L. So if you're combining all small elements from x equal to 0 to x equal to L, so the final result would be L only. Like if you have this pen and you divide this pen into number of equal small, very small elements, और आप उन्हें combine करते हैं right from x equal to 0 to x equal to L. So once you combine them 0 to L, you will get the total length L. This would be the total length L. So integration means you're combining small elements from some lower limit to upper limit. And this dx could be anything. This dx could be time, this dx could be velocity, it could be acceleration, it could be force, it could be any quantity, not just length. So in integration, we combine small elements from one point to another. And you're combining this from x equal to 0 to x equal to L. This x equal to 0 is known as lower limit. This is lower limit. X equal to L is known as upper limit. This is the upper limit. So doubts बताइए मुझे. Physically integration is this. You are combining small elements right from some initial limit to some final limit, from lower limit to some upper limit. This combination of small elements is known as integration. This is symbol of integration. This is again a symbol of integration. ये basically आपको बताएगा that which variable are you integrating. Yes, Maitri. Yes. मैं करा दूंगा, लास्ट में करा दूंगा, याद दिलाना, मिस हो गया मुझसे. इसे लिख लो और मुझे बताओ उसमें अगर कोई डाउट है. अभिषेक, any doubt? No, sir. Abhishek, no doubt. Tisha,
मुझे बताओ अगर इसको रब करना है. Yes, sir, done. So okay, done. So let's rub it up. The next is now some formula for integration. Just like differentiation, you have separate formulas for polynomial function, for trigonometric functions, and then exponential function. Let's say you have a polynomial function. So it is a polynomial function. The polynomial function is of this form. Y is x to the power n. That's a polynomial function. When you differentiate y, not differentiation, we are doing integration. So we are integrating x to the power n dx from some lower limit x equal to 1 to upper limit, or instead of x equal to 1, simply write this as x1 to x2. We're integrating it from x1 to x2. This x1 is the lower limit. We consider this as lower limit. And this x2 is considered as the upper limit. So that is the lower limit and upper limit. The formula of this integral is, and again, we are not deriving the exact formula, we're just using direct results. So x to the power n, the integral of x to the power n would be, it's x to the power n plus 1 divided by n plus 1, and you're integrating it from lower limit x1 to upper limit x2. So it's reverse of differentiation. In differentiation, it was n x to the power n minus 1. The power was n minus 1. Here the power is n plus 1. In differentiation, you are multiplying with n. Now you are dividing with n plus 1. So that's x to the power n plus 1 by n plus 1. In the next step, you can take this n plus 1 outside. So this is x to the power n plus 1. Limit is from x1 to x2. In the next step, you can just substitute the limits. The upper limit is x2. So instead of x, just substitute x2. So it would be x2 to the power n plus 1, then minus. Then instead of this x, write x1. So it would be x1 to the power n plus 1. So that's integral of x to the power n dx from x1 to x2. This is limit substitution. This step is known as limit substitution. You are substituting limits here. एक example देखो, clear करेगा. So let's say you are integrating x to the power 3 dx from 0 to 1. Just compare. Instead of x1 you have 0. Instead of x2 you have 1. Instead of n you have 3. So the result will be x to the power n plus 1. So that's x to the power 3 plus 1 divided by n plus 1. So that's 3 plus 1. Limit, it's 0 to 1 now. So this is x to the power 4 by 4, and the limit is from 0 to 1. So this is 1 by 4. So 1 by 4 is a constant. X to the power 4, 0 to 1 now. So this is 1 by 4. Upper limit is 1. So this is 1 to the power 4 minus 0 to the power 4. So that's 1 by 4 only. Doubts? ये first example clear कर देता है. सर एक मिनट सर, आप क्या कहते हैं 1/4 और x to the power 4 और ऊपर 1 लिखा 0 लिखा, स्टेप से भी रिपीट कर दीजिए. देखो. So we're integrating this x cube dx. So it would be x to the power 3 plus 1. Just मैं यहाँ से compare कर रहा हूँ. 3 plus 1 divided by 3 plus 1. And the limit is from 0 to 1. 3 plus 1 is 4. So this is x to the power 4 divided by 4, which is from 0 to 1. This 4 is constant. इसको बाहर ले आओ. It would be 1 by 4. This 4 is in denominator. It would be 1 by 4. X to the power 4, 0 to 1. Now it's limit substitution. Upper limit is 1 to the power 4, 0 to the power 4. It would be 1 by 4. That's limit substitution. Yes, Maitri.
Clear now? हाँ ठीक है, थैंक यू। Sure. भाई बताओ मुझे, इतना हो जाए तो रब करते हैं। यस सर, डन। डन। अभिषेक, पद्मा, डन सर। चलो अब आप सॉल्व करोगे। द नेक्स्ट इज, इसको ट्राई करो एटलीस्ट। दिस इज t to the power half dt, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। फाइनल आंसर चाहिए मुझे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। Sir, 2 divided by 3. 2 by 3, okay. So Abhishek is 2 by 3. May 3 be 2 by 3, okay. दोनों के आंसर्स हैं बस अब तक। Divyanshi be 2 by 3, okay. So this is t to the power half. T to the power half का integral, yes Padma. So this is t to the power, it's half plus 1 divided by its half plus 1 at the limit is 0 to 1. So this is, it's t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2, limit is 0 to 1. So it's 2 by 3, t to the power 3 by 2, limit is 0 to 1 now. So it's 2 by 3, it's 1 to the power 3 by 2 minus 0 to the power 3 by 2. So it's 2 by 3 only. So almost सबका ठीक आ रहा है। आमना हो गया? हो गया। एक एग्जाम्पल और करो। -1 2 + 1 1 by t cube dt। चलो इसे भी सॉल्व करो। 1 by t cube dt। Sir, -1. -1, okay.
Okay. -1 में 3. मैत्री अब तो मैथ्स भी ले लो. आमना 0. ओके. दिव्यांशी का भी -1. सर गलत आंसर 0 है मेरा. 0 है. ओके. So this is, it's t to the power -3 dt. Limit is from -1 to +1. So this t to the power -3 dt, the integral is t to the power -3 plus 1 divided by -3 plus 1. Limit is from -1 to +1. So this is t to the power -2, -2 divided by -1 to +1. So it's -1/2. T to the power -2. T to the power -2 is 1 by t square. Limit is from -1 to +1. So it's -half. Upper limit is 1, so it's 1 by 1 square minus 1 by -1 square. So it's -half. It's 1 minus 1, which is 0. So सामना इन अभिषेक ठीक थे. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ना, -1 के स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं. स्क्वायर भी है. इतना लिखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं. दिव्यांशी, तिशा. So it will be 0, not -1. बताओ मुझे, से रब करूं. चलो गया, इसको फिर मैं रब कर रहा हूं. So these were basic integrations. के बाद कुछ trigonometric relations याद करो for some trigonometric functions. Integrals of some trigonometric functions. The first one is integration of sin x dx. Limit from x1 to x2. Integral of sin x is minus of cos x. Limit is from x1 to x2. Second is integral of cos x dx. Limit is from x1 to x2. Integral is sin x. This is from x1 to x2 now. Okay. Third देखो. Now in almost all numericals आप just sin और cos use करोगे, but in few numeric आप ये देख लो, अगर आपको tan x चाहिए, tan x dx, ये बहुत कॉमन इंटीग्रल्स नहीं है. tan x का इंटीग्रल इज माइनस ऑफ log cos x. Integral of tan x is minus of log cos x. Then its limit from x1 to x2. Just like tan x, if you have x1 to x2, cot x. The integral of cot x is log sin x, and the limit is from x1 to x2. Then after cos x, you have sec square x dx. Limit is from x1 to x2. Sec square x is tan x. It's from x1 to x2 now.
Then you have x1 to x2 cos x square x. So that's minus of cot x. Limit is from x1 to x2. इतना नोट करो. बस मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ. You won't use as then sin and cos. जो आप functions use करोगे, you will use only sin and cos functions, nothing else. सो सर इसके पहले का आंसर क्या कहते हैं वही था ना, -1. 0 0 0 था. तो मैं आउट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा. So it was ये था ना 1/2 -1/2 बाहर आ गया था. It was t to the power -2. यहाँ तक लिखा था 1/t square. Yes, Vetri. यस सर, यस सर. So just substitute the limits. So it's 1/1 square minus 1/-1 square. So what is -1 का whole square? It's 1. यस सर. And this is again 1. They will cancel each other. Vetri. यस सर, यस सर. So it would be 0. No, 1 minus 1 would be 0. सब clear? यस सर. These are some basic relations. बट आप सिर्फ साइन कॉस आपको आना चाहिए. आप साइन कॉस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे. मुझे बताओ जब इतना हो जाए. कुछ फंक्शंस और देखते हैं. Done, sir. Okay. डन सर. Okay. So the next is 1 by x. Just two more integrals, huh? Integral of 1 by x dx from x1 to x2. 1 by x का integral is log x. Remember, 1 by x का integral is log x from x1 to x2. Then you have e to the power x dx from some limit x1 to x2. So this is e to the power x. Limit is from x1 to x2. So that's e to the power x. Limit is from x1 to x2. E to the power x. Limit is x1 to x2 now. So यहाँ तक clear है? इसको लिख लो जल्दी से. These are basic formulas. फिर कुछ properties करते हैं. Some properties of integration. यस सर, डन. Hopefully we will wind it up today. आज खत्म हो जाना चाहिए. 1 घंटा है. स्कोर अप करते हैं. So properties of integration. The first property is if you have a constant function, only a constant. If you have a constant function, like you are integrating some constant k dx from x1 to x2. So this k is a constant. इसे आप बाहर ले जाओ. You are left with dx. Limit is from x1 to x2 now. So that's k आप बाहर ले गए. dx का integral is x. Limit is from x1 to x2. It's k. Upper limit is x2. Lower limit is x1. So that's k x2 minus x1. So this is a constant function. Integral of k dx is k x2 minus x1. After constant function, the next type of function is, so if you have dx, then integral of dx is x. If you have dy from y1 to y2, then the integral of dy is y. Limit is from y1 to y2.
if you have dz, integral of dz is from z1 to z2. dz का integral is z, limit is from s1 to z2. इसको याद रखना, if you have just dy, then integral is y. If you have just dz, the integral is z. Second, product of constant and function. Product of constant and function. If you have a product of one constant and function, this is k fx dx, limit is from x1 to x2. If k is a constant, just k को बाहर ले जाओ, you are left with fx only. So this is x1 to x2, it's fx dx. अब जो भी fx होगा उसे आप इंटीग्रेट करोगे. एग्जाम्पल देखो, say you are integrating 1 to 2, you are integrating x square dx. So the integral of x square is x, not just x square, not just x square, not just x square. Say you are integrating 3x square dx. So in the first step, take this 3 outside. You are left with 1 to 2, it's x square dx now. So this is 3. Integral of x square is x cubed by 3, and the limit is from 1 to 2. 3 gets cancelled out with this 3, and this is x cubed, limit is from 1 to 2. Or you can write this as it's 2 cube minus 1 cube. So 8 minus 1 is 7. So the integral of 3x square is 7 now. तो ये आपको जस्ट सीखना था. इफ यू हैव अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जस्ट इंटीग्रेट द होल फंक्शन एंड मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट. दैट्स इट. डाउट्स? हियर आर एग्जांपल्स. Sir, can you repeat one more time? So you're integrating 3x square dx. Okay, 3 is a constant, x square is a function. So just take this 3 outside. So this 3 is outside. You are left with only x square dx. The integral of x square is x cube over 3, right? X to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1. So it's x cube over 3, and the limit is from 1 to 2. This constant 3 will get cancelled out with this 3. They get cancelled out. This is x cube only. Just substitute the upper limit, which is 2 cube, minus lower limit, which is 1 cube. So 8 minus 1 is 7. बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है. जस्ट एक नया है कि आप कांस्टेंट को बाहर ले आओगे इंटीग्रल में. बाकी स्टेप्स वैसी हैं. यस सर, आपने बोला था dx का इंटीग्रल x होता है. if you have only dx, but dx के साथ अभी x स्क्वायर है. ओके अगर सिर्फ dx बचता है कहीं तो. सोमिया क्लियर है? Yes, sir. चलो कुछ एग्जाम, मुझे 2 एग्जांपल्स अब तुम लोग करके दिखाओ. हाँ हम ना करेंगे अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स करेंगे जहाँ लिमिट्स नहीं होते. इंडेफिनिट इज इजी, लाइक यहीं खत्म हो जाता है. ये यहीं खत्म हो जाएगा, इस स्टेप पर खत्म हो जाएगा. लिमिट्स रखने की जरूरत नहीं है. रब करूं इसे? No, sir. ओके चलो इसे रब करते हैं. अभिषेक रब करूं इसको अब? Yes, sir. सॉल्व दिस एग्जाम्पल. इसमें गड़बड़ मत करना. 2 by x square dx, limit is minus 1 to plus 1. करो फाइनल आंसर.
Sir, 0. 0. Okay. Zero, zero, zero. No. तो सबका गड़बड़ आ रहा है, एक आमना का शायद कुछ ठीक है। It's -1, 2 + 1, 2x to the power -3dx, -2dx. So 2 बाहर आ गया। It's -1, 2 + 1. शायद सोमिया का ठीक है, नहीं आमना का भी नहीं, सोमिया का शायद ठीक है। x to the power -2dx. So the integral of x to the power -2, it's -2 + 1 divided by -2 + 1. Limit is from -1 to +1. So this is 2 x to the power -1 by -1. Limit is -1 to +1. ये नेगेटिव हो गया, -2 x to the power -1 from -1 to +1. This x to the power -1 could be written as 1 by x. So it's -2, it's 1 by 1 minus 1 by -1. It's 1 minus minus plus हो जाएगा, it's 1 + 1. नहीं, आमना ठीक है, -2 × 2, it's -4. अब गड़बड़ मार दो, हर जगह स्क्वायर थोड़ी ना है कि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। पावर 1 है तो -1 -1 +1 होगा। डाउट्स बताओ मुझे, यहाँ क्या डाउट्स रह गए? इसको रब करूं, इतना क्लियर है तो? मैत्री, तिशा, रब करूं इसे? Third property, addition and subtraction of functions. If you have multiple functions, addition and subtraction of functions.
लाइक अगर वो आपसे कहता है यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स, another function gx, another function hx and dx, and you are integrating it from some x1 to x2 now. So you have multiple functions. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इसे आप मल्टीपल इंटीग्रल्स में डिवाइड करो. ये जो dx है, ये dx सिर्फ hx के साथ नहीं है. दिस dx इज विद gx, दिस dx इज विद fx, इट इज विद fx, gx, hx सबके साथ है. You can simply write this as this is x1 to x2, it's fx dx plus x1 to x2, it's gx dx plus x1 to x2 hx dx. मल्टीपल इंटीग्रल में ब्रेक कर दो और सबको सॉल्व कर लो. लाइक अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, लाइक मैं आपसे कह रहा हूँ जस्ट इंटीग्रेट 0 to 1 3t square plus 2t plus 1 dt. So you have multiple integrals, huh? minus 1 dt. So इसे आप ब्रेक कर लो, ये 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा. It's 0 to 1 3t square dt plus 0 to 1 it's 2d dt minus 0 to 1 it's 1 dt. That's multiple integrals में से आपने ब्रेक कर दिया. अब इसे सॉल्व कीजिए फर्दर, कितना आता है. इसे फर्दर सॉल्व करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना है. आमना का आंसर 1 आया. ओके मेरी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करिए. सिर्फ आमना का आंसर आया है, मेथ्री का आंसर आया है 1. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सोमिया, तिशा, दिव्यांशी, अभिषेक. दिव्यांशी का -1. ओके इससे रिलेटेड है उसे यार बताओ.
बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है? बताइए। आंसर इज 1। अब उजैर ऐसा नहीं हो सकता ना, इसमें नहीं है तो फिर अभी रुके रहो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप किसी भी बैच में आ जाए, मैं उस बैच को रोक कर इंडिविजुअल डाउट्स लेना शुरू कर दूं, तो बड़ा मुश्किल काम है। रुको अभी रुको, तो फिजिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर दिस 3 इज कांस्टेंट, ये बाहर चला जाएगा। इट्स 0 to 1 t square dt plus 2, it's 0 to 1 t dt minus 0 to 1 dt. So this is 3 t square को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल इज इट्स t cube by 3, limit is 0 to 1 plus 2, integral of t is t square by 2, limit is 0 to 1 minus dt का integral is t, it's 0 to 1. So this 3 will cancel this 3. It's 1 cube minus 0 cube. This 2 will cancel this 2. Then this is 1 square minus 0 square. And this is 1 minus 0. So it's 1 plus 1 minus 1 gets cancelled out. This is plus 1. One plus 1. एक न्यूमेरिकल और करते हैं, just addition and subtraction, but it's one more numerical, one last. This is minus 1, 2 plus 1, 2 by t square plus t minus 5 dt. इसे जरा सॉल्व करके दिखाओ, आंसर क्या? बस इट्स द लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद कुछ नहीं है। Sir, It's the last numerical. हाँ sir, I have a doubt in question. The previous question. हाँ बताओ। Sir, जो आपने ये दिया था ना, जो क्वेश्चन में f 0 1 t by t, जो थर्ड पॉइंट है, हाँ हाँ थर्ड सर, उसमें जो आपने सॉल्यूशन में दिया ना t ब्रैकेट 0 by 1, तो सर इसमें पावर तो इटसेल्फ 1 हो जाएगा ना फिर? दिस इज जस्ट tt ना, दिस इज जस्ट tt. सो तो इसका dt का पावर इंटीग्रल इज t ओनली। सर ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ बताओ कैसे? t 1 plus 1 divided by 1 plus 1 ना इट्स नॉट t, इट्स नॉट t. तुम इसकी बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो t dt की। इट्स नॉट t dt, इट्स जस्ट dt. ओके। अगर तुम चाहो ना, यू कैन राइट दिस dt एज t to the power 0 dt, है ना? t to the power 0 is 1, so it could be t to the power 0 dt.
हाँ भी उजैर, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं तुम बताओ तुम्हारा क्या डाउट है। उजैर, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं आप बताइए क्या डाउट है आपका। अच्छा, एचसी वर्मा में हाँ उसने सॉल्व एग्जांपल्स में कुछ दिए हुए हैं, जब वो इंटीग्रेशन समझा रहा है उसके आगे नहीं दिए, बस जितना दिया उतना कर लो, इट्स मोर देन एनफ। जितना इंटीग्रेशन यूज होता है उस पर उसने सॉल्व एग्जाम्पल में दे दिया, इट्स मोर देन एनफ। मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा करा दिया था इसके आगे। आमना का आंसर इज -13। आमना का आंसर इज -13। देखो ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ना तो हम आगे बहुत स्पीड में आगे की चीजें कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उजैर says -14, ओके। अभिषेक, तिशा, -10। बड़ा वेरिएशन है, -10 में 3 का आ रहा है, ओके। हाँ उजैर बोलते जाओ, सुन रहा हूँ। -14 आया, ओके। पद्मा, -14। दिव्यांशी का भी -14, गुड। सो देखो इसे आप लिख सकते हैं, इट्स -1 2 + 1, इट्स 2t⁻⁻2 plus t-5 dt. So it's -1 2 + 1 2t⁻⁻2 dt plus it's -1 2 + 1, it's t dt. It's -1 2 + 1 5 dt. So इसे आप लिख सकते हैं, ये 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 2, this is 2 integral of -1 2 + 1 t⁻⁻2 dt plus -1 2 + 1, it's t dt -5, it's integral of -1 2 + 1 dt. It's t⁻⁻2, जब आप इंटीग्रेट करोगे it's -2 + 1 divided by -2 + 1, limit is from -1 to +1. Then this is t⁻1. The integral of t⁻1 will be its t square divided by 2, limit is from -1 to +1, -5. The integral of dt is t, limit is -1 to +1. So it's 2 t⁻⁻1 by -1. It's -1 2 + 1, 1 by 2. It's t square. Limit is from -1 to +1, -5.
t to the power -1 to +1. So it's -2 t to the power -1 को 1 by t लिख सकते हैं. It's -1 to +1 t square, which is -1 to +1 -5, which is t to the power -1 to +1. ये कुछ नहीं. So this is -2. It's 1 by 1 minus 1 by -1 plus 1 by 2. It's 1 square minus -1 square -5. It's 1 minus -1. So it's -2 minus minus plus हो जाएगा 1 plus 1. 1 by 2 1 minus 1 -5 1 plus 1. So it's -4. ये तो 1 minus 1 0 हो गया ना. गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं कुछ. हाँ सही है. ये तो कैंसिल हो गया. ये 0 आ गया. -10 हो गया. So it's -14 now. So कई लोगों का ये मैच कर रहा था. That's -14. It's good. अगर इस इतनी कैलकुलेशंस में आप परेशान नहीं है तो फिजिक्स में एटलीस्ट जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो परेशान नहीं करेगा आपको. अगर कहीं कुछ इश्यूज आएंगे तो कैलकुलेशन में इश्यूज आ सकते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं. कितना लिखो फिर आगे बढ़ता है. इतना लिखो जिनसे नहीं हुआ था. और डाउट बताओ मुझे अगर किसी को कोई डाउट है इसमें. इतना हुआ. रब कर दूं इसे. सो दैट्स एक्सट्रीम. मतलब इंटीग्रेशन में जो आपको एक्सट्रीम मिलेगा न्यूमेरिकल्स में, वो उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा. अब बस एक मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो समय कुछ कोचिंग सेंटर्स के अगर आप पैकेजेस पढ़ोगे वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कुछ लोगों ने ऐड किया हुआ है. तो बस समझ लो. मैं आपको किसी भी नीट के न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. एनसीईआरटी में तो खैर सिर्फ बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल आता है. सब्स्टिट्यूशन में एग्जांपल से बता सकता हूँ आपको. जैसे मैंने आपको ये दिया. इट्स मैं आपसे कहता हूँ साइन x स्क्वायर 2x dx है. लेट्स से 0 से लेकर π/2 तक ऐसा कुछ दिया हुआ है. वो कहता है इसे इंटीग्रेट करो. तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए देख रहे हो यहाँ दो फंक्शंस हैं. सब्स्टिट्यूशन में किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा होता है. जैसे देखो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x. तो ये आपको दिखेगा कि किसी एक का डेरिवेटिव उसी लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप एक काम कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर को आप t लिख दीजिए. जब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे
सो दिस इज 2x dx इज dt। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को t लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। पार्शियल डेरिवेटिव लास्ट क्लास में सिखाया था। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ dx लिखोगे। t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dt लिख दिया, तो 2x dx इज dt। तो यहाँ ये जो 2x dx आ रहा है ना, इसकी जगह dt रख दो, और ये जो x स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह t रख दो। तो ये आ गया 0 से लेकर π/2 sin t dt। बट एक चीज याद रखिएगा, ये जो लिमिट्स गिवन है ये x की लिमिट्स हैं। पहले मुझे इस स्टेप तक बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये स्टेप बताओ, ये स्टेप क्लियर है? तो एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो देखो, जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करना है तो हमेशा तुम्हें मिलेगा एक फंक्शन का एक पार्ट का डेरिवेटिव तुम्हारे सिस्टम में आ रहा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ 2x आ रहा है। सो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, लाइक एक्स स्क्वायर को t रख दिया। अगर मैं एक्स स्क्वायर को t रख रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। एक्स स्क्वायर को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स की रिस्पेक्ट में, सो इट्स dx। देन दिस इज t का डेरिवेटिव 1। किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? t की रिस्पेक्ट में, सो दैट्स dt। सो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx को हम dt लिख सकते हैं, सो दैट्स sin t dt। अब जब आप इस sin t dt को डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ sin t, अब एक चीज और चेंज करनी है, एक चीज और है। हाँ, अब बताओ, यहां तक क्लियर है सबका? मैत्री, यस सर। लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स x की दी हुई है, बट अब आप इंटीग्रेट t की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट्स को t की टर्म्स में चेंज करना होगा। ये सब x के बिना। तो देखो यहां से मिल जाएगा, जब x 0 है, t क्या है? x स्क्वायर, देन t वुड बी 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0। इफ योर x इज π/2, what is t? It's x square. It's π/2 का स्क्वायर, which is pi square by 4. So आपको लिमिट्स मिल गई। जब x 0 है तो t 0 है, जब x π/2 है तो t pi square by 4 है। तो आपको लिमिट मिल गई, दैट लिमिट इज, t की लिमिट इज 0 to t is pi square by 4. This is sin t dt। इस स्टेप तक डाउट्स बताइए। पद्मा? सर एक Sir, मिनट can सर, आपने जब x इज इक्वल टू 0 लिखा ना, वहां से बस बता दीजिए कि आपने कैसे ये रहा ना, करा t है। is x square। हाँ, so if x is equal to 0, so it will be 0 का स्क्वायर 0। t is x square ना, हमने सब्स्टिट्यूट करा यस है। सर। If your x is π/2, then t will be x square, which is π/2 का स्क्वायर, pi square by 4। ओके सर। पद्मा, आप कुछ पूछ रही नहीं? now cleared, sir? Clear? Yeah. So this is sin t dt. So the integral of this sin t is, it's cos t, limit is 0 to its pi square by 4. So this is cos, it's pi square by 4 minus cos 0. Not sin का integral is not cos, it's minus cos. तो माइनस साइन में बाहर ले गया, cos pi square by 4. So it's minus of, देखो पाई को लिख सकते हैं 3.14 का स्क्वायर बाय 4 माइनस cos 0। cos 0 कितना है? 1। अब ये मुझे नहीं पता, अगर ऐसी चीज आपसे कैलकुलेट करवाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देगा या इसकी वैल्यू देगा कि ये क्या होती है एग्जैक्टली। हमें तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स याद होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स याद होते हैं, 30, 60, 45, 90। बट अगर कुछ रैंडम उसने दे दिया, लाइक 3.14 by 4, तो वो देगा इसकी वैल्यू क्या होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन हम कैसे यूज कर रहे हैं? ये समझ में आया सबको? एक और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं 0 से 1 तक इंटीग्रेट कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 10 को। तो यहाँ हिंट मैं आपको दे रहा हूं, 2x स्क्वायर, नॉट x स्क्वायर, 2x प्लस 3।
2x प्लस 3 को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x प्लस 3 को t सब्स्टिट्यूट कर दो, आगे सॉल्व करो, मुझे बताओ व्हाट्स द फाइनल आंसर। मेरी कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। क्या यार, मैं इतना खुश हो रहा था तुम्हारी कैलकुलेशंस अच्छी हो गई, इतनी देर से लटके हो। हाँ, आमना का आया कुछ आंसर 1/22। ओके, मैत्री क्या हो गया? कैलकुलेटिंग। हाँ हाँ, तेजी तेजी से तेजी से, अब तो तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक हो गई है, स्पीड बढ़ाओ। ऐसी धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं बैच में। अरे वाह, 1/22 दोनों का मैच कर रहा है। दिव्यांशी, तिशा, अभिषेक, पद्मा। कोई खतरनाक नहीं था। खतरनाक बेटे आएंगे अभी धीरे धीरे ना, अब
जब हम मैकेनिक शुरू करेंगे तब खतरा दिखेगा, अभी कुछ नहीं है। और अब कर दूं इसको। अच्छा, और किसी का नहीं आया, ये गलत बात है। तुम लोगों से क्यों नहीं हो रहा, कहाँ अटक रहे हो? आखिरी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, तो वैसे टी रख दिया ना, सो दिस इज 0 से लेकर दिस इज 0 to 1 टी टू द पावर, अरे यार ये था 0 to 1 2x plus 3 to the power 10 dx। ठीक है, 2x plus 3 को t रख देते हैं, so you have 2 dx equal to dt। dx is dt by 2, so 2x plus 3 को t कर दिया, so that's 0 to 1 it's t to the power 10 into dt by 2, dx is dt by 2, so it's 1 by 2 बाहर चला गया, it's 0 to 1 t to the power 10 dt, it's 1 by 2 t to the power 10 is 10 plus 1 by 10 plus 1, limit is from 0 to 1, so it's 1 by 2 t to the power 11 by 11 0 to 1, so it's 2 into 11 t to the power 11 0 to 1, 1 by 22 t to the power 11 0 to 1, yes, 1 by 22, 1 to the power 11 0 to the power 11 1 by 22 आंसर। डाउट्स? दिव्यांशी का भी आ गया था, एक सौम्या और एक तिशा, ये दो, और एक अभिषेक, तीन का नहीं आया था। सौम्या, तिशा एंड अभिषेक क्लियर है? सॉरी, ठीक। So that was about integration. Integration is over. Now after integration, next is अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो मुझसे मैत्री ने कहा था, 1 by x is 1 by a plus 1 by b। इसे डिफरेंशिएट करना है, तीनों वेरिएबल्स हैं। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, a to the power -1 plus b to the power -1, x to the power -1 को डिफरेंशिएट करना है, इट्स -1 x to the power -1 dx आ जाएगा, x को कराए -1 a to the power -1 dA आ जाएगा, -1 b to the power -1 dB आ जाएगा, so it's minus of x to the power -2 dx minus of a to the power -2 dA b to the power -2 dB, so माइनस हर साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हो ये माइनस 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 सब प्लस हो गया, dx by x square dx by x square dA by a square dB by b square। ये इक्वेशन dx by x square dA by a square plus dB by b square। नहीं आमना, आपको आइलेट नहीं सीखना, आपको नहीं सीखना आइलेट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कभी यूज नहीं करोगे, वो जेई वालों के लिए बस।
अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो एरर में मैंने लिखा था अगर ये 1/x इज 1/a प्लस 1/b होता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट रिलेशन लिखा था डेल्टा x बाय xm स्क्वायर डेल्टा a बाय am स्क्वायर डेल्टा b बाय bm स्क्वायर। वो यहीं से आता है, डेल्टा x इज दिस एरर dx, डेल्टा a इज ds, डेल्टा b इज d। ओके चलो बच्चों, आज यहीं छोड़ते हैं, थर्सडे कंटिन्यू करेंगे। सो थर्सडे विल स्टार्ट मोशन इन 1 डायमेंशन हम स्टार्ट कर देंगे। वेक्टर्स हो गया, कैलकुलस हो गया, विल स्टार्ट मोशन इन 1D, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अब ये समझो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर चाहिए वो आप सीख चुके हो। चलो आज यहीं छोड़ते हैं, थर्सडे स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बाय। सर वो जो हमने लास्ट स्टेप लिखा है एरर एनालिसिस का, वो लिखना जरूरी है या फिर जब हम वहां पर छोड़ देंगे तो वो भी चलेगा? कौन सा ये हाँ, तो वाला? हमने जो एक्स्ट्रा किया है एरर वाला ये वो लिखना। ना 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 ना, हाँ, ये नहीं, ये तो बस मैं आपको याद दिला रहा था कि आपने एरर में किया था। न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, बाय चलो सर। ओके ओके।